I welcome respected principal sir to join this session. The agenda of the session is to inform you all that the 12th class examination is going to start from the 12th of February, which is very crucial. We as a teacher see skills, potential, and abilities in each and every student to achieve good marks in the examination. There are certain guidelines. If you follow, you will be able to achieve good marks in your examination, and that will be beneficial in your whole life. There are certain guidelines which will be shared by this practice. So I welcome respected principal sir on the stage to share his valuable thoughts to motivate you and achieve you in your life. Thank you. You should be having a notebook, and notebook should be opened, and whatever crucial points are shared, all points are to be noted. They are to be registered in the mind. Yes, no. Speak without the mic. Voice is audible to everybody. But a few days before, our country lost World Cup final. Even though the country had won 10 matches on the trot. On the trot means without failing anywhere. India had won 10 matches, and that too by huge margin. No match was won by narrow margin. On the other hand, Australia had lost certain matches before they reached final. But who took the World Cup? Australia took the World Cup. Why? Because final match was not won by India. Final match was won by Australia. The examination in which you are to appear now, I believe for you, it's your World Cup final. This is your World Cup final. By God's grace, with the efforts of your teachers, you have reached this stage. Now, in order to reach this stage, up to what extent have you won? Up to what extent have you lost? Doesn't matter. What matters is you have reached this stage. So you are to play the World Cup final. If you win, nobody will talk about your previous failures. This match you lost, this match you lost, this match you lost. In this examination, your score was not good. In this examination, your score was not good. In this class, you did not do well. In this class, your participation was not very strong. Everybody will talk about your success in this final. Right? But if suppose in this final, for any reason, you don't do well, so you will be considered
a loser. This is not the good word. So India did not win the final match. Therefore, so far as cricketing history is concerned, in the cricketing history, India will be considered a loser, not the winner. So in your academic history, आपकी भी तो एक academic history तैयार हो रही है ना हर रोज के आधार. In your academic history, if you want that the 15 years time period which you have spent here, that 15 years time period should be considered the period of success all through your life. For that, your success in this final match is very important. Now, what happens when a final match is lost? Like India lost the match. Later on, there was analysis which was done by the experts. What was their analysis? These many singles were missed. इतनी सिंगल्स ली जा सकती थी. यहां हमारे बैट्समैन ने शार्पनेस नहीं दिखाई और 12 सिंगल्स लूज कर गए. अगर वो 12 सिंगल्स ले लेते तो 12 रन बढ़ जाते. इतने बॉल्स थे जो लूज डिलीवरीज थी जिनके ऊपर 4 लगना चाहिए. 5 ऐसी बॉल्स मिस की, 20 रन मिस की. वो 20 रन अगर मिल जाते तो टारगेट अच्छा सेट हो जाता. उससे ऑपोजिशन टीम के ऊपर एक दबाव है और इंडिया मैच जीत जाए. यहां ये कैच छूटा. वो कैच छूटने के बाद बैट्समैन ने कितने रन और बनाए, और अगर वो कैच लपक लिया जाता तो इंडिया मैच जीत जाए. उतने रन बनते ना कि प्रेशर और बढ़ता, इंडिया मैच जीत जाता. अब ये आपको देखना है कि ये फाइनल चल रहा है, शुरू हो गया है फाइनल. उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कई सिंगल्स आप लूज कर रहे हो, कई फोर्स आप लूज कर रहे हो, कि आसान से टॉपिक्स हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, वो हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं करता और हम लूज कर रहे हैं. ओके, टीचर क्लास में हमसे पहले पहुंच गए, हम 2 मिनट के बाद क्लास में पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया जो कि एग्जामिनेशन में आ गया और हमने एक सिंगल लूज कर दिया, यानी कि एक मार्क लूज कर दिया. राइट, होता है ऐसा. हम बीच में चले गए, बाहर वॉशरूम चले गए, वाटर पॉइंट चले गए, पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता गए टीचर, पेपर में आ गए और हमने 4 नंबर लूज कर दिए. एक चौका लगाया जा सकता था, मिस हो. राइट, देखिए कितनी एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठ रही है कि फाइनल जीतना है तो सिंगल्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मिस करें. फाइनल जीतना है तो ये सोचकर कि ये तो आसान टॉपिक है, ये तो इजी सब्जेक्ट है, इसको साइड पे करो, तो हम कई फोर्स अपने मिस कर जाएंगे जिसपे आसानी से 4 और 6 लग सकते हैं. ठीक है, हमने वो मिस कर दिया. और अगर हम ऐसा करते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, तो विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट foolish learners, the most foolish, the most stupid students. I don't think that any one of you would like to be called a stupid student who is losing a winning match. Understood? Right? If suppose India had won the match, अगर इंडिया फाइनल जीत जाता, like in 1983 India won the first World Cup. उससे पहले इंडिया ने कभी कोई मैच जीता ही नहीं. अब ऐसी टीम which had never won any match, that team is playing in 1983 World Cup and is emerging as the winner. अब you think of those players जिन्होंने 1983 में मैच खेला.
या वर्ल्ड कप खेला 1983 और आज कितने ईयर्स हो गए? 40 ईयर्स, 40 ईयर्स हो गए। ठीक है, वो 40 ईयर्स के बाद भी वो सारे प्लेयर्स जिन्होंने वो मैच खेला या जो वर्ल्ड कप टीम में थे, दे आर लीडिंग द लाइफ ऑफ प्राइड। आज दे आर लीडिंग द लाइफ ऑफ प्राइड। They were the members of that team which won the first World Cup. तब से ही इंडियन बैटिंग, इंडियन बॉलिंग स्ट्रांग होनी शुरू हुई। अच्छे अच्छे लोगों ने, टैलेंटेड प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ देम। When India won 1983 World Cup, at that time Sachin Tendulkar decided to play cricket for India. He felt inspired. Right? If this team that is to play the World Cup now plays in such a manner that you create a history where average score of the class is 80%. Average score of the class is 80%. Rest of the students studying in the school, for them, you will be a source of inspiration for generations, year after year. हमें भी जीतना है, हमें भी ऐसा ही खेलना है, हमें भी कुछ ऐसा ही डिसिप्लिन अपने अंदर दिखाना है, हमें भी वर्ल्ड कप जीतना है। Getting 80% average marks, this is not a very high target. But if suppose this target is achieved, then this class is a winner class. Right? This should be everybody's target. Then this class becomes a team. टीम की तरह खेलना हो, टीम की तरह कि भाई अगर मैं 80% नहीं ले सकता तो 77, 78 से कम तो बिल्कुल नहीं। दूसरा 82% ले, तीसरा 83% ले, चौथा 90% ले, तो एवरेज स्कोर हमारा 80% आ जाता है। लेकिन कोई कहे कि मैंने 45% लेना है, then because of that particular person, the whole team will lose and opportunity will be lost. जो एक मौका है कि हम generations के लिए source of inspiration बन सकते हैं, will be losing that opportunity. So this is a challenge. इस चैलेंज को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए what do we need to do? Who can really help you the most? Anyone? ये जो टास्क है एवरेज 80% marks. Okay? If this task is to be successfully accomplished, who can give you the best support, the best help? You can extend maximum support to each other. How? Let me explain. I went to the school today. All teachers were present. All teaching periods were conducted. In every teaching period, the teacher gave us very useful information, which is very useful, very vital from the examination's point of view. Why didn't you come? तुम क्यों नहीं आए? You should also be present in that class. What did you miss? What more important work were you doing at home? You are friends to each other. This is what you need to do. भी मैं तो गया, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ. Right? You are sincere friends to each other. Being sincere friends to each other, you talk to the other friend of yours. How are you behaving with the teacher today during English period? यार इंग्लिश के पीरियड में कैसे बिहेव किया अपने टीचर के साथ? She got disturbed. She couldn't teach well later on. वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा पाया. So because of you, I also suffered.
Because of you, the whole class also suffered. And what did you gain? तुम्हें क्या मिला इसमें? This should be a dialogue. If this is the dialogue, the other person will also realize. Okay? इस तरह से आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. तो भाई आपने लिख कर दिया है एस्टिमेटेड मार्क्स में कि भाई यू विल बी गेटिंग 75 आउट ऑफ 80. आपने लिख कर दिया है सर को. मैं आपसे मांगूंगा कि अगर आपने लिख कर नहीं दिया तो आपको देना होगा कि आपका खुद का अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मार्क्स आर यू एमिंग एट इन इंग्लिश, इन पंजाबी, इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन अकाउंटेंसी, in commerce, like this. Okay, so suppose you have written there 75 out of 80, right? So your friends, you will be asking each other, भाई तुमने कितने मार्क्स लिखे? भाई मैंने तो 75 लिखे, मैंने तो 65 लिखे, मैं भी 75 लिखा. जब आपने 75 लिखे, कितने लिखे? 75. भाई are you studying for 5-6 hours every day? No. How much time are you spending? 1 hour. तो 1 hour में 75% कहाँ से आ रहे हैं? ये 75 marks out of 80 कैसे आ रहे हैं? 75 marks out of 80 का मतलब है more than 90%. तो 1 hour में कैसे आएंगे? अगर 75 लेने हैं तो at least 1 hour to each subject is required to be devoted. And if you devote 1 hour to each subject every day, then only you will be able to score 75 out of 80. Otherwise, it is not possible. मैं तो पढ़ा, मैंने कल पूरे 5 घंटे पढ़ाई थी. ये देखो, ये 50 मिनट्स मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, 75 मिनट्स मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, इसमें मैंने ये काम किया, 80 मिनट्स मैंने ये काम किया, 45 मिनट्स मैंने इस सब्जेक्ट को दिए, 30 मिनट्स मैंने इस सब्जेक्ट को दिए. अगर ये आपका कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ हो, तो क्या ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम नहीं बन सकती? क्या इस प्रकार का कॉन्वर्सेशन पिछले 6 महीनों में हमने बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ किया? क्या इस प्रकार की बातचीत अक्सर हमने एक दूसरे के साथ की पिछले 6 महीनों में? कि यस या नो? इधर ये फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए. यू आर ऑल स्टूडेंट्स. फॉर योर एकेडमिक सक्सेस, फॉर योर फाइनल सक्सेस, what efforts are you making? Those efforts must be shared with one another. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा रिवॉर्डिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन और क्या हो सकती है? बताएं. ये देखो कितने टफ न्यूमेरिकल्स थे. आज सुबह 4 o'clock उठा, 2 घंटे में सारे ही हो गए. Isn't it exciting? ये एक्साइटिंग डिस्कशन नहीं है. ये 5 क्वेश्चन मुझे कभी समझ नहीं आए थे. 4 to 6 पढ़ाई की, 5 के 5 मुझे समझ आ रहे. सुन लो मिशन मेरे से, सुनोगे? Right? How exciting this kind of discussion is. Why don't we have such exciting discussions with one another? Who stops us? इस प्रकार की डिस्कशंस हमारी अगर नहीं होती, तो क्या हम वर्ल्ड कप हार नहीं जाएंगे? सोचे. रोज हम इतनी सिंगल्स मिस कर रहे हैं, इतने कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, इतनी फ्री हिट्स लूज कर रहे हैं, इतने फोर्स, इतने सिक्सेस मिस कर रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड कप हारेंगे नहीं. टीम है तो टीम में जीतने की डिस्कशन अगर नहीं होगी तो फिर जीत कहां से मिलेगी? एफर्ट्स की डिस्कशन. एफर्ट्स क्या है? भाई कल जो पढ़ाया था तो तुमने रिवाइज किया? छोड़ो, मैंने थोड़ी रिवाइज कर लेंगे, जब पेपर आएंगे हो जाएगा तब देख लेंगे. मैंने तो किया. अब अगर एक जना कहता है छोड़ो, दूसरा कहता है मैंने तो किया, तो जो छोड़ो वाला है वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा ना, मुझे भी कर ही देना चाहिए.
वो अगर करता है तो टीम जीतेगी, अगर वो नहीं करता है, एक जना करता है तो टीम तो हार गई ना, टीम तो हार गई ना, राइट। ये छोड़ो वाला जो है ना, उसको भी सही रास्ते पर लेकर आना। वो कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? You. Collective effort, if it is there, then victory will be there. If collective effort is not there, victory will not be possible. अब अगर जीत चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है अर्ज। अर्ज, अर्ज का मतलब कीन डिजायर टू विन। अगर जीत चाहिए तो कीन डिजायर टू विन, अर्ज बहुत जरूरी। हर दिन के आधार पर यू नीड टू सर्च। सर्च मीन्स मूव अहेड। व्हाट इज सर्च? मूव अहेड, आगे बढ़ना। आज और कितना सीख लिया, आज और कितना काम कर लिया, how much more work has been done, how many more numericals have been solved, how many more questions have been understood, how many new words have been understood, how many new phrases have been done, how many new literary devices have been. All this is to be done on a daily basis, improving. Every day we are a little better than yesterday. If urge is there, if you are surging on daily basis, then final as a winner. Then you emerge as a winner. So first it is urge, then it is surge, and then it is emerge. What is the meaning of urge? To have keen desire to win. Surge, move ahead, to become better, to improve, to evolve, right? And then to emerge. Okay? Now, nobody considers that the students living somewhere in the remote areas of Amritsar, right on the border, they will ever win. When in 1983, Indian team went to play World Cup match, World Cup tournament, nobody could ever think that India is a contender for World Cup trophy. Nobody could even think, because India had never won any match to say that. In 75, India did not win. In say 78 or 79, India did not win. एक भी मैच नहीं थी. So India was never considered a contender for World Cup trophy. जिन्होंने एक मैच नहीं जीता, उन्होंने माइटी वेस्ट इंडियंस को 2 बार हराया. माइटी वेस्ट इंडियंस तो 2 बार हराया. ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, राइट? सबको हराया. और then as winners, right? So if suppose in past you have not won, if suppose nobody considers you a contender, no problem, less pressure is there, pressure कम है, okay? But you need to have this belief in yourself, I will be winning the trophy. You have to have this belief in yourself, because this opportunity, if it comes only once. इसके बाद दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं आना, राइट? एंड यू हैव रीच्ड द स्टेज, यू आर देयर इन द फाइनल. आप फाइनल में आ चुके हैं. अब उस फाइनल को जीतना या हारना ये चॉइस है आपका. अगर चॉइस है जीतने की तो आप जीतेंगे, फॉर श्योर जीतेंगे. चॉइस है हारने की, देन इवन गॉड कैन नॉट मेक यू विन. Right? You need to act as God to one another. आपको एक दूसरे के लिए गॉड बनना होगा. Right? You need to inspire each other.
आपको एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। जो धीर किसी के भी काम में देखे, as and when you see or find any kind of casualness in anybody's efforts, immediately you need to tell, but this is casualness. With this kind of casualness, not only you, team will also lose. For your sake and for team's sake, don't work and don't play in a casual manner. Your wicket is very important. Don't throw away your wicket. हमारी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको ऐसे फेंको मत, सारी टीम हार जाएगी, राइट? ये हमारी सोच होनी चाहिए, सर्च एंड इमेजिनेशन. Now I am giving you some tasks. Number one, you need to prepare your timetable. Timetable means your practice hours. What are you supposed to prepare? Timetable. Note it down. This is task for you. Timetable. Usually what happens, we prepare timetable and we ignore timetable. That means practice hours are there. Coach says, go to the field and do your practice. और उसमें से जो सिंसियर हैं तो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कई छोड़ो कर लेंगे. ये जो छोड़ो कर लेंगे, they will definitely spell doom for the entire team. सारी टीम को मरवाएंगे. We are not to let it happen. दूसरे को भी खड़ा करना है. चलो प्रैक्टिस टाइम, चलो प्रैक्टिस टाइम. तो कल टाइम टेबल के मुताबिक काम किया था. इसमें जब प्रैक्टिस आवर्स की बात है तो अर्ली आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. विच आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? अर्ली आवर्स. अर्ली आवर्स 4 o'clock, 4 to 6 are very important hours. 4 to 6 are very important hours. वर्ल्ड कप जीतना है तो उसके लिए अगर 4 to 6 प्रैक्टिस करनी पड़े, is it a very big sacrifice? Look, you are to win World Cup. If you are to win World Cup and you are to wake up at 4 o'clock and you have to study from 4 to 6, is it a very big deal? No, right? A little bit of sleep is to be sacrificed. A little bit of comfort is to be reduced. A little bit of relaxation hours are to be reduced. And victory will be yours. जीत आप 100%. Right? अब 4 to 6 में आपने क्या पढ़ना है, that is your choice. Right? उसके बाद when you go back from the school, whenever you want to start, whenever you want to finish, decide it yourself. वो भी आपकी choice. Yes? लेकिन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है. That is called discipline. इसको discipline बोलते हैं. Whatever subjects you have, उसमें you are to decide how much time is to be devoted to which subject. It depends upon the complexity of the subject. If a subject is very difficult, you need to devote more time on that. If subject is a little less difficult, then you need to spend a little less time. But spend time compulsorily on every subject. Because every subject will determine either your victory or defeat. You cannot say English is not an important subject. You cannot say Punjabi is not an important subject. ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इजीली 4s और 6s लग सकते हैं, और उसका अगर अभ्यास ना किया तो फिर जो मार्क्स आने वाले होंगे, यू विल बी लूजिंग दोस मार्क्स. इज इट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड? Understood by all? Right? So this way you have to prepare your timetable. Now timetable you will be able to prepare. You will remain
firm on timetable if you have got some target with you. अब वर्ल्ड कप जीतने का टारगेट अगर होगा तो डेफिनेटली आप टाइम टेबल को भी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीतने का टारगेट ही नहीं है तो टाइम टेबल कहां से फॉलो करेंगे? राइट? तो क्या करना है हमें? अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट का मतलब एस्टिमेटेड मार्क्स, estimated marks. Estimated marks. Right? In each subject, you are to decide what is your target. Right? Practice will be strong. Practice will be strong. Practice will be good. Practice will be determined. Practice will be focused if target is high. If target is low, टारगेट हम कैसे सेट करते हैं? 80 में से 45, 80 में से 50, that means target is low. That means practice will not be strong. Okay? Sacrifices will not be there. Hard work will not be there. Persistent, consistent, regular efforts will not be there. So without that, what will happen? You will get defeat. Okay? फाइनल में आकर हार गए, फाइनल में आकर हार गए मतलब हार गए। अब इंडिया लॉस्ट, जितना मर्जी कह लें, we played very well, we played all the 10 matches very well, then what? You did not play well in the final. Right? This is your final. In this final, if you need to play, then it's important, then you should निशाना किस चीज के ऊपर होना चाहिए? विक्ट्री के ऊपर। कितना है? 80% एवरेज मार्क्स, 80% एवरेज मार्क्स। सारे एस्टिमेटेड मार्क्स अपने बनाएंगे कि सब्जेक्ट इज दिस, ओके, टारगेट दिस, सब्जेक्ट इज दिस, target this, subject is this, target this. If this target is high, you will be following your timetable. If this target is low, you will be ignoring your timetable. Right? Okay? So this is something which I would like all of you to do. Right? उसके बाद, this is important that you decide if you are to achieve your target for that regularity. Is it important or it is not important? Regularity. Regularity is the point. What kind of regularity? 100% regularity means 100% attendance. Whichever working days are left, on those working days, 100% attendance, 99% attendance, 98% attendance, that is yours. Okay? जीत आपकी है और हारनी आपकी नहीं होगी। तो जीतने का की अगर चॉइस है, then for that, how much attendance is important? How much regularity is important? What kind of classroom presence? What kind of classroom presence should be there? Focused or distracted? Focused. Classroom, your classroom that is your practice place, that is your preparation place. ये practice place है, ये preparation place है, ये आपका net, उसकी पूजा होनी चाहिए। वहीं से जीत को उभरेंगे, वहीं पर अपनी शॉर्टकमिंग्स को पहचानेंगे, वहीं पर शॉर्टकमिंग्स के ऊपर मेहनत होगी, वहीं पर शॉर्टकमिंग्स को दूर किया जाए। There all your shortcomings will be noticed, all your shortcomings will be worked upon, and all your shortcomings will be removed. Right? Therefore, the time that you are spending in the classroom, that should be treasured, that should be valued by everyone. उसको सारे बच्चे बिल्कुल उसकी इज्जत करेंगे, उसकी कदर। Right? मैंने क्या था बेटा? I have said it all. अब आप बताएं, what is your decision? What is your decision? Raise your hand. What is your decision?
What have you decided? You have to emerge as a team that wins and throws a surprise for the whole world, or you want to lose this opportunity. What is your choice? Those whose choice is victory, they raise their hands. You see, why victory? With victory, you experience pride. With victory, you get respect. With victory, you experience success everywhere. With victory, you get admiration everywhere. With victory, you lead the life with your chin up. Otherwise, head down. So we are not to lead the life with our head down. We are to lead the life with our head high. So keep your head high. सारी जिंदगी सर उठा के जिएंगे अगर ये वर्ल्ड कप जीत गए। और अगर कहीं पर भी स्लिप हो गए और वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया तो बहानों के अलावा कुछ नहीं, एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं। We, your teachers, are strongly there in your support. So it's very important that you get the benefit of this support. जब हम लर्नर हैं तो एक चीज हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ईगो। दिस इज द बिगेस्ट रीजन विच डजंट लेट यू लर्न। आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी क्लास के सामने इंसल्ट हो गई। क्यों इंसल्ट हो गई भाई? अगर कोच आपको कहता है कि तुम गलत खेल रहे हो, ये सही ढंग नहीं है, इसको इस तरह से नेगोशिएट करो, इस चैलेंज को, इस प्रकार की डिलीवरी को इस तरह से लेना है, इसमें क्या बेइज्जती है? अगर कोच आपको नहीं बताता है तो विकेट लूज करो। बॉल तो आएगी 150 किलोमीटर की रफ्तार, विकेट उड़ा के रहिए। तो उससे बेटर ये नहीं है, कोच की बात को सुनो, कोच की डांट को सहो। कोच की डांट को सुनना, कोच की डांट की इज्जत करना और उसकी डांट के बदले में उसको थैंक्स कहना, या थैंक्स का भाव अपने मन में रखना, मत कहो लेकिन मन के अंदर थैंक्स का भाव होना चाहिए कि यस, मेरे कोच ने मुझे कुछ बताया। अगर आपका कोच आपको नहीं बताता है तो विकेट तो भाई राइट, टीम हार गई। इसलिए नो ईगो, कोई ईगो नहीं। टीचर ने जो कहा, टीचर आपके वेलफेयर के लिए आपको कह रहा है, तो उसमें ये नहीं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कहा। और जो बेस्ट लेसन मेरे मुताबिक हमने आज की इस डिस्कशन से सीखा वो क्या है? जो आपको शॉर्ट जिताएगा। क्या है वो? व्हाट इज दैट? बी अ सेलर। एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना, एक दूसरे को हमेशा गाइड करना, एक दूसरे को हमेशा करेक्ट करना, एक दूसरे को हमेशा सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलकर। तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैं गया, मुझे ये सीखने को मिला। तुमने आज किसी भी क्वेश्चन का जवाब कब करनी है तैयारी? पेपरों के बाद, जब फाइनल हार जाएंगे। मैंने तो की थी तैयारी। देखो आज मैंने 6 क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही दिए थे क्लास में, तुमने नोटिस किया? पहली बार हुआ है और टीचर ने भी कितना अप्रिशिएट किया मुझे। तुम क्यों नहीं तैयारी कर रहे? You understand? So be true, be sincere, be honest friend
to your friend. You understood? ये आपको जरूर करना होगा, तब आप और आपकी टीम जीत पाएगी। कर सकेंगे? कर सकेंगे? आप ही एक दूसरे को जिताएंगे। कोई और बाहर से आपको नहीं जिता सकता। You yourself need to help each other to win this final. Okay? Final आ गया, सर पे है। उसके लिए जो माइंडसेट होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो मन के भाव होने चाहिए, वो आपके स्कूल की प्रेजेंस में दिखने चाहिए। हाँ भाई, ये फाइनल खेलने वाली टीम है, कितनी फोकस्ड, कितनी सिंसियर है, कितनी डिसिप्लिन है, कितनी हम्बल है, जमीन के साथ जुड़ी हुई, कितनी कीन है जीतने के लिए, और एक दूसरे को कितना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। Tell me, is it possible or it is not possible? Okay? Thank you, thank you, thank you. I told you all that there should not be any hesitation in clapping. You listen and the time gets over, throw the class. That's not the way. I should also get this kind of feeling that whatever has been communicated, it has been kept in the mind, it has been absorbed, it has been registered, and everybody will be working on that. Will we be working? Task which has been given to you, that should be done by tomorrow, timetable, okay, and estimated marks. Okay?